आपकी श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। आप कृपा पूर्वक मेरे षड वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। 6 वेग अर्थात वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और जननेंद्रियों का वेग। 6 दोष अर्थात अधिक आहार, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, प्रजल्प, भक्ति के नियमों में दुराग्रह अथवा अनाग्रह, कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। 6 गुण अर्थात भक्ति साधन में उत्साह, निश्चयता, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, सदाचार। 6 सत्संग अर्थात प्रीति पूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्ति रहस्यों को सुनना, प्रसाद सेवन करना, प्रसाद सेवन कराना। एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है। अतः आप मुझे कृपा पूर्वक कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल हूँ अर्थात दीनहीन हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। Jai, thank you very much. Hare Krishna. Okay, now today let me remove the spotlight. Would somebody like to read just the verse and translation? Second lesson. This is we're on the third one. बिल मंगल ठाकुर प्रभु जी, आप प्लीज रीड कर दो। Yes, which थर्ड वर्स, chapter? टेक्स्ट नंबर 3, Utsaha Nishchayatariya. टेक्स्ट नंबर 30, इंग्लिश में 30, टेक्स्ट नंबर 3। Yes. जय श्रील प्रभुपाद की जय। उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संघ त्यागात सतो वृत्ते षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। पुनः अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, 2 निश्चय के साथ प्रयास करना, 3 धैर्यवान होना, 4 नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, 5 अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा 6 पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्ह पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करता है। तात्पर्य, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक दूरबीन नहीं है। प्रभु जी हरि बोल, परपट नहीं पढ़ना। We did that last time and we'll run out of time if we do that every time. Okay. So today we're going to go through the Vaishnava Acharyas commentaries. तो आज हम वैष्णव आचार्यों की टीकाओं पे चर्चा करेंगे। So the first one is Upadeshamrita Bhasha by Bhaktivinoda Thakur. It's more or less just giving our translation again, but there are some interesting explanations that will help us to understand. तो आज हम उपदेशामृत भाष्य सबसे पहले लेंगे जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है, जो कि इंटरेस्टिंग है काफी। Okay, so utsaha, enthusiasm. उत्साह का मतलब होता है enthusiasm. It's utsaha, isn't it? You've already got it. Okay, so Vishwas, he's put utsaha nischayat, he's put Vishwas. So Prabhupada was quite
explaining that actually nishchaya, it meant confidence, because it meant faith, but also faith with enthusiasm. We had to actually do something when we have our faith. That will come up a little later in the Vaishnava, in the Acharya's commentaries as well. तो प्रभुपाद बहुत जगह निश्चय का मतलब विश्वास भी बोला करते थे, यानी कि उत्साह और निश्चय का मतलब बहुत ही विश्वास के साथ उत्साह होना, जो कि हम जिसके बारे में भी आगे भी और चर्चा करेंगे. Okay, patience, dhairya, you already know. Tat karma, prescribed duties, activities by which pure devotional service is cultivated. तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब ये होता है कि ऐसे गतिविधियां जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो. Sangha tyag, giving up bad association. संग त्याग मतलब गलत लोगों का संग को त्याग कर देना. Now, sadhu vritihi, he has translated very precisely as living the life prescribed for a saintly person. तो सतोवृत्ति का बहुत अच्छे से अनुवाद किया गया है, मतलब कि उस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना जो साधु संतों के लिए बोला गया हो, जिस प्रकार से. Because if we just say following the footsteps of the saintly acharya, we don't really know what's meant by that. And we can think, oh, well, we're just following the footsteps. But this is actually telling us how to live our lives. तो सतोवृत्ति का अगर ये अनुवाद कर देते कि पूर्वतीय आचार्यों के पद चिन्हों में चलना, तो हमें समझ नहीं आता. हम सिर्फ हमेशा यही बोलते रहते हैं कि हाँ, हम उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं. नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से एक साधु का जीवन होना चाहिए और हमें उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है. He says, by taking shelter of these 6 qualities, perfection in bhakti is attained. तो इन 6 गुणों का अगर हम संग करते हैं तो भक्ति में परफेक्शन आ जाती है, बिल्कुल अच्छे से हम भक्ति कर पाते हैं. He further clarifies, utsaha, enthusiasm, is necessary in order to perform loving devotional service. और इसके अंदर आगे ये भी बताया गया, उत्साह जो है वो प्रेम में ही भक्ति सेवा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है. Nishchaya or vishwas, firm faith in devotional service. निश्चय मतलब बहुत विश्वास होना, भक्ति में दृढ़ विश्वास होना. And dhairya is to adopt a quality which will support and aid in our devotional service. तो धैर्य मतलब एक ऐसा गुण जो कि हमें अपने हमारी भक्ति में जीवन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, मदद करता है. And tat karma is the endeavor by which bhakti flourishes, as well as by the endeavor by which one earns one's livelihood. So there's 2 aspects to tat karma. There's one that helps our bhakti flourish, and there's also the one that helps us maintain ourselves. तो तत्त कर्मा के 2 मतलब होते हैं. पहला कि वैसे कार्य जो हमारी भक्ति में उन्नति करने में मदद करे, और दूसरा अर्थात होता है ये जो हम अपने जीवन को जीने के लिए कमाई करते हैं, उसके लिए हम जो कर्म करते हैं, तत्त कर्मा का एक मतलब वह भी है. Okay, so the next commentary is also by Bhaktivinoda Thakur. तो अगला भी जो हम पढ़ेंगे अभी वो भी भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा है. As I mentioned before, they've spent a lot of time thinking about these verses. And this is the second one, and he's also got Bhakti Aloka later on. तो माता जी कह रही है कि मैंने पहले भी बोला था कि हम इन वाले श्लोकों पे थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, और इसके बाद भक्तिया लोक हैं जो मेन 4 श्लोक हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कवर करे हैं, उसमें से उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे श्लोक पर. So he talks about this tat karma in the beginning. Maintaining one livelihood is necessary, as well as cultivation of loving devotional service. So both these aspects have to be focused on. तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि तत्त कर्म का मतलब ये है कि अपनी आजीविका कमाना और भक्ति के लिए भी कर्म करना, और ये दोनों ही एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हैं. He says the first half of this 3rd verse prescribes activities favorable for the cultivation of devotional service. तो ये इस वाले श्लोक का पहला हिस्सा है. अगर 2 हिस्सों में से बांटा जाए तो ये पहला हिस्सा है जो कि व्यक्ति के कर्मों के ऊपर चर्चा करता है. So that's utsaha nischaya dhairya tat karma pravartana.
So this is 1, 2, 3, 4 items. तो यहाँ पे 4 चीजें कवर हो रही हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म, प्रवर्तनात्। Now remember, he's already said that tat karma also includes the life of the life as a devotee. So tat karma and sangatyag and sadhu vritihi are prescriptions meant to guide the life of a devotee. तो जैसे तत्त कर्म बताया गया कि भक्ति के लिए कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से एक भक्त को जीना चाहिए, तो तत्त कर्म, संग त्याग और सतोवृत्ति ये एक मनुष्य की जो जिम्मेवारियां हैं उसके ऊपर प्रकाश डालता है। Utsaha, meaning enthusiasm for devotional service, because devotion is destroyed by indifference. तो जो उत्साह का मतलब है वो भक्ति में जीवन में रुचि होना है एक तरीके से, क्योंकि यही भक्ति को चलाता है। And utsaha also means to cultivate devotional service with great respect and care. तो इसका एक मतलब, उत्साह का एक मतलब ये भी होता है कि भक्ति को उगाना किस तरीके से, बहुत ज्यादा सम्मान से और बहुत ज्यादा ध्यान से। Nischaya or means firm faith. और निश्चय का मतलब दृढ़ विश्वास। Dhairya means not to become slack in devotional practice, even if we don't immediately get our desired goal. Not become, what was it? Slack, lazy. ओके तो धैर्य का मतलब है कि हमें अपने भक्ति में जीवन में बहुत उत्साहित रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए अपने भक्ति में जीवन में, और सोचना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो ये भक्ति करने से कुछ नहीं बन रहा। So tat karma means regulations that nourish bhakti and regulations that prescribe what should be avoided so that one's bhakti is protected. तो तत्त कर्म का मतलब है कि एक व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, और दूसरा कि क्या क्या चीज एक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जो अपनी भक्ति में उन्नति करना चाहता है। So hearing, chanting, etc. are prescribed to nourish bhakti. तो श्रवण और कीर्तन और भी जो भक्ति के अंग हैं वो इसीलिए बोले गए हैं ताकि भक्ति में उन्नति हो सके। And the direction to give up one's own personal enjoyment and happiness for Krishna's sake is a restrictive rule which is prescribed. तो अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यह तो एक नियम है ही है। Sangatyag means giving up association with irreligion. तो संग त्याग का मतलब है अधर्म के साथ अपने संग को खत्म कर देना। With women or people who are in the mood of enjoying women, or vice versa, men for women. मतलब स्त्रियों के साथ पुरुषों के लिए स्त्रियों के साथ, और स्त्रियों के लिए पुरुषों के साथ अपने संग को खत्म कर देना जो कि उनसे इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। And non-devotees. और अभक्तों से। Which means sense enjoyers, mayavadis, atheists, and dharmadvajis. तो जिसका मतलब है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जो अधर्मी होते हैं, मायावादी होते हैं और धर्म के दुश्मन होते हैं, ऐसे लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए। And sadhu vritihi means behavior, lifestyle, and activities practiced by the saintly, as well as the means and duties by which they earn their livelihood. तो सत्ववृत्ति का मतलब होता है कि हमारा वैसा व्यवहार, वैसे लोगों के साथ संग जो साधु संत जैसे लोग होते हैं, उस तरीके से अपने जीवन को जीना। और व्हाट वाज द लास्ट टाइम माता जी? The means and duties by which they earn their livelihood. और वैसे तरीके जो कि जिस तरीके से एक भक्त को अपना आजीविका कमानी चाहिए। A renunciate should live by madhukari, and a householder should carry out his duties by shastrically approved means appropriate to his varna and ashram. तो जो सन्यासी हैं उनको मधुकरी पे ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और जो गृहस्थ हैं उनको अपनी रोज का काम करना चाहिए उसी प्रकार से जो उनके धर्म को, वर्ण को, और वर्ण के खिलाफ नहीं है और धर्म के खिलाफ नहीं है। ऐसे कार्य एक गृहस्थ को करने चाहिए अपनी आजीविका कमाने के लिए। Now the next commentary is by Bhaktisiddhanta Saraswati.
I'm just looking at it. It seems, I think the meaning is the same as what we've already read from Bhakti Vinod Thakur. जो अगली टीका है वो भक्ति सिद्धांत महाराज जी के द्वारा है, लेकिन माता जी कह रही हैं कि मैं देख रही हूँ ये लगभग वैसी ही है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने दी है। And he's just put it in nice Bengali poetry. बस उन्होंने उनको एक बंगाली कविता के तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। And now another one by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur called Upadeshamrita Anuvriti. तो अब अगली है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के द्वारा जिसको उपदेशामृत अनुवृत्ति भी बोला गया है। So it's Utsaha. He gives some more detail onto the meaning of Utsaha. तो उत्साह के ऊपर भक्ति सिद्धांत महाराज और भी कुछ मतलब दे रहे हैं। He said Utsaha means to be indifferent towards the processes of Gyan, Karma, and Anya Bilash, which means other desires. तो भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि ऐसी ज्ञान, कर्म और अन्य अभिलाष, right? Yeah, we have to be indifferent to those and avoid all pleasing talks about them. तो ज्ञान, कर्म और अन्य अभिलाष जो से दूर रहना चाहिए और ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए करी जाती है। And be very enthusiastic to practice sadhana bhakti. और बहुत उत्साह होना चाहिए साधना भक्ति करने के लिए। And to remind us, he gives a Bhagavad Gita, half a Bhagavad Gita sloka. Yani sarvabhutanam tasyam jagarati samyami, 269. What is night for all beings is the time of waking for the self-controlled. तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसके अंदर हमें भगवत गीता का भी एक श्लोक लिख के दिया है जो कि 2nd चैप्टर का 69 श्लोक है, जिसका मतलब है कि जो भौतिक लोगों के लिए सोने का समय है वो संतों के लिए उठने का समय है। And for Nischaya, he says devotional service of the Lord is one's only goal in life. तो निश्चय का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति ही सिर्फ एक मनुष्य का एक ही गोल है, मकसद है। One should have firm conviction about this. और एक भक्त को इसके ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। The 3 paths of Gyan, Karma, and Anya Bilash can certainly not create any auspiciousness. क्योंकि सिर्फ ज्ञान, कर्म और अन्य अभिलाष कोई भी शुभता नहीं लाते। And for Dairya, he refers again to Gyan, Karma, and Anya Bilas. He says that these paths will make the jiva restless. It's अन्य अभिलाष और अन्य अभ्यास। Anya Bilash. अन्य अभिलाष, okay, right. I thought I'm speaking wrong. Yeah, it's the one from Nectar of Devotion. You should have learned that in Bhakti Shastri also, right? Yes, and ज्ञान कर्म आदि अन्य अभिलाष दर्शन। Yes, that's the one. Yes, so ज्ञान, कर्म और अन्य अभिलाष के लिए भक्ति धैर्य का मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला है कि ज्ञान, कर्म और अभिलाष में, अन्य अभिलाष में अगर हम लगेंगे तो हमेशा जो हमारा मन है वो इधर उधर भटकता रहेगा, कभी शांत नहीं रह पाएगा। So the path of devotional service is the undeviating steady path for the pure soul. तो जो भक्ति का रास्ता है वो एक शुद्ध आत्मा के लिए बिल्कुल जो एक शुद्ध आत्मा है वो कभी भी इस रास्ते से नहीं भटकेगी। And when we have firm faith in this, that is called Dairya. और जब हमें इस चीज में दृढ़ विश्वास होता है कि भक्ति से हम कभी जो हमारी आत्मा है उस पर लगती है और उससे नहीं भटक सकती, तो उसको हम धैर्य कहते हैं। Such fixed understanding means firm conviction that there will be no disadvantage at any time for anyone who follows the path of bhakti purely. तो पूरा दृढ़ विश्वास होने का मतलब है कि हमें पता है और हर किसी के लिए, हर किसी के ऊपर ये चीज लागू होती है कि जो भक्ति करता है वो कभी गिरता नहीं है, और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। And he quotes a verse from Srimad Bhagavatam, which Prabhupada used to quote a lot. Yenye Aravindaksha Vimuktamaninas Tvayasta Bhavad Avishuddha Buddhayaha Aruya Kritshrena Param Param Tataha Patyantyado Anadrita Yusmad Angrayaha. So it's Srimad Bhagavatam 10:2-32. Okay.
तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने यहाँ पे भागवतम के 10th कैंटो के 2nd चैप्टर का 32nd श्लोका भी लिखा हुआ है, जो कि हमारे प्रभुपाद जी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। And this is Lord Brahma speaking, and he says that although non-devotees accept severe austerities and penances to achieve what they think is the highest position, and they think themselves liberated, their intelligence is impure. तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, इसमें इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में भगवान से बोल रहे हैं कि ये जो अभक्त है, ये लोग बहुत सारी तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं अपनी तरफ से, उनके लिए जो सबसे ऊंची चीज है उसको पाने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता वह कितने अशुद्ध हैं। And they fall down from their imagined superiority because they don't respect the Lord's lotus feet. और वो जो है अपने आप को बहुत महान समझते हैं, और उस पद से वो बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सुपीरियरिटी को, भगवान की महानता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Now, the verse after that of the Srimad Bhagavatam has a very interesting translation. I won't read the verse because it's not one that we're familiar with, but the translation is very nice. तो माता जी कह रहे हैं कि अब इसका जो अगला श्लोक है, उसकी जो अनुवाद है वो कि बहुत अच्छा है। तो माता जी कह रही है कि मैं श्लोक भी पढ़ देती हूँ, क्योंकि वो ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो बहुत ज्यादा जगह बोला गया हो। So what this, I assume this is Lord Brahma speaking again. If devotees completely in love with you sometimes fall down from the path of devotion, they do not fall like non-devotees. तो इसका जो अनुवाद है माता जी कह रही है वो बहुत सुंदर है, माता जी ने उसको पढ़ा है। उसके अंदर ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं कि जो एक अभक्त है, जो भक्त है, अगर वो कभी भक्ति के पद से गिर भी जाए तो भी वह इतनी बुरी तरीके से नहीं गिरता जिस प्रकार एक अभक्त गिर जाता है अपनी झूठी प्रसन्नता से या झूठी पद से। He says, because you still protect them. He's talking to the Lord, obviously. Hmm. So you are still under the protection of the Lord. क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भक्त है वो गिरने के बाद भी भगवान के संरक्षण में रहता है। Thus they fearlessly traverse the heads of their opponents and continue to progress in devotional service. और भगवान की संरक्षण की वजह से जो भक्त है वो अपने जो गलत लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं उनकी जिंदगी में, उनसे भी लड़ लेता है और उनकी चीजों से उसको कोई भी असर नहीं पड़ता और अपनी भक्ति में, कार्य में लगा रहता है और उसमें उन्नति करता रहता है। So we have to come to the stage of being completely in love with Krishna. तो हमें ऐसे स्तर पे आना है कि जब हम पूरी तरीके से कृष्ण से प्रेम में हो। Now there's a verse in Chaitanya Bhagavat, which is quoted by Bhakti Siddhanta. Kanda kanda hai deha yaya yadi prana tabu ami vadanena chari harinama. Even if my body is cut into pieces and I give up my life, I will never give up chanting the Lord's holy name. Who is speaking this? This comes from Chaitanya Bhagavat. I don't know who's actually speaking it. तो चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है जो कि माता जी ने अभी बोला, जिसका अनुवाद इस प्रकार है कि चाहे मेरे शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाए, लेकिन मैं फिर भी हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। And so in the purport to this, because this was translated and purported by Bhakti Siddhanta Saraswati, the purport Bhakti Siddhanta says in explanation, the material body received from the father and mother is non-permanent. तो इसमें भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपनी टीका करी है, जिसके अंदर भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि जो ये हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, ये जो हमें अपने माता पिता से मिला है, ये नॉन परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। A life that is averse to the service of Krishna and absorbed in material happiness is also perishable or changeable. और जो जिंदगी भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई और भगवान की भक्ति से विपरीत चल रही है, वो भी खत्म हो जाती है। But the holy names of the Supreme Lord and the Supreme Lord himself are not two separate objects. लेकिन जो भगवान है और भगवान का नाम है वो एक ही चीज है, वो दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। Spiritual names are not like the names of material objects invented by human beings within the time factor.
तो ये जो आध्यात्मिक नाम है ये बाकी नामों की तरह नहीं है कि जो समय के साथ साथ ढल जाते हैं। नहीं, ये हमेशा था, है और रहेगा, और ये भगवान से विभिन्न नहीं है। It says the spiritual name and the possessor of that name are one. तो जो ये आध्यात्मिक नाम है और जो इस नाम जिसका ये नाम है वह दोनों एक ही व्यक्ति हैं। Therefore, I can never give up chanting the holy names and repose my faith in gross and subtle bodies. और इसीलिए मैं कभी भी हरि नाम लेना नहीं छोड़ सकता और अपने विश्वास को दूसरी भौतिक चीजों में नहीं लगा सकता। The constitutional position of a living entity is that he is an eternal servant of Krishna. तो जीव का जो नित्य स्वरूप है वो कृष्ण का दास होना है। In other words, every living entity is a Vaishnava. तो अगर हम दूसरे शब्दों में इसको बोले तो जो हर जीव है वो वैष्णव ही है। And Vaishnavas have no other activity than chanting the holy names of Sri Hari. और वैष्णवों के पास सिर्फ भगवान का नाम जपने के अलावा कोई और गतिविधि नहीं होती। Now I'll stop reading now. Otherwise, we'll never get to the end if I read everything. Okay. Okay, tat tat karma parashna. Understanding the prescribed duties and performances of those desiring liberation and those desiring enjoyment to be services opposed to Krishna. तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब है कि ऐसे लोगों की गतिविधियों को समझना जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे और भौतिक चीजों में लगे हैं और इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखते हैं। So then we have to remain indifferent to them while engaging in the practice of devotional service. तो भक्ति करते हुए हमें इन लोगों से अलग रहना चाहिए। Sangha Tyag is again what we've read about giving up non-devotees and those wanting liberation, temporary enjoyment. संग त्याग का तो मतलब हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी कि भक्तों का संग नहीं करना और भौतिक वस्तुओं में नहीं उलझना। Now there's a verse from, where did it go? From Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:145. Jnana Vairagyadi Bhaktira Kabu Nahi Anga. Ahimsa Yama Niyamadi Bule Krishna Bhakta Sangha. The path of speculative knowledge and renunciation, Jnana Vairagya, is not essential for devotional service. तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 22nd चैप्टर का 45 श्लोक अब यहाँ पे आ गया है मध्य लीला से, जिसके अंदर बोल रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य का जो पथ है वो एक भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। Indeed, good qualities such as violence and control of the mind automatically accompany a devotee of Lord Krishna. परंतु जो अपने मन को वश में करना और किसी से लड़ाई ना करना ये अपने आप ही एक व्यक्ति में आ जाती है जब वह भक्ति करता है। Now, Srimati has also quoted part of Srila Prabhupada's purport for this. तो श्रीमती माता जी ने इस संदर्भ में प्रभुपाद का भी एक तात्पर्य लिया है। Sometimes a neophyte devotee or an ordinary person thinks of speculative knowledge, austerity, penances, and renunciation, thinks very highly of speculative knowledge, austerity, penances, and renunciation. तो कभी-कभी जो एक भक्त है, you said sometimes a non-devotee, right? A non-devotee or a neophyte devotee, Kanishta. कभी-कभी जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो अभी-अभी भक्ति में जुड़े होते हैं, जो भक्ति में नहीं जुड़े होते, उनको लगता है कि तपस्या करना, दान वगैरह करना, यही सबसे ऊंची गतिविधियां हैं। And thinking them that they are a way to achieve advancement in devotional service. और उनको लगता है कि यही एक रास्ता है भक्ति में उन्नति करने का। But actually, this is not a fact. लेकिन ये तो सत्य नहीं है। The path of knowledge, mystic yoga, and renunciation has nothing to do with the pure soul. तो जो ये ज्ञान का पद है या जो भी पद है ये सब जो है ये भक्त के लिए अनिवार्य नहीं है। When one is in the material world, such processes may help a little, but they are not necessary for a pure devotee of Krishna. जो व्यक्ति एक भौतिक जगत में है उसको शायद ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है।
If we stick to them while we're in the material world, such activities will result in material enjoyment or else merging into the effulgence of the Supreme. तो यदि लेकिन हम भक्ति में आने के बाद भी इन सब चीजों में ही विश्वास रखते हैं और इन सब चीजों को ही करते रहते हैं, तो ये या तो हमारे भौतिक सुखों को बढ़ाता है या फिर हमें भगवान के ब्रह्म उसमें प्रकाश में लीन कर देता है. They have nothing to do with the eternal loving service of the Lord. और इन चीजों का भगवान की प्रेम में नित्य सेवा से कोई भी लेना देना नहीं है. If one abandons speculative knowledge and simply engages in devotional service, he has attained perfection. लेकिन जब कोई इन सब ज्ञानों को त्याग के सिर्फ भक्ति में लग जाता है तो उसने सबसे ऊंची पद्धति प्राप्त कर ली है. And Bhaktisiddhanta quotes a verse from Srimad Bhagavatam 5:18-12. Yasyasti bhaktir bhagavat yukanchana sarvaya gunas tatra samasate kusura harava bhaktasya kuto mahadguna manoritena sati davato bahi. Which means that all the good qualities of the demigods will arise in one who's a devotee. तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी भागवतम के 5th कैंटो का 18 चैप्टर का 2nd श्लोक लेते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि जो भी देवी देवताओं में अच्छे गुण हैं वो अपने आप ही एक भक्त में आ जाते हैं. And if somebody is not a devotee of the Lord, no matter what he thinks he has achieved in his life, there are no good qualities at all. लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी जिंदगी में क्या पा लिया. क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा, तो वो सब व्यर्थ की चीजें हैं. Conclusion. तो इसका क्या कंक्लूजन है, क्या निकलता है निचोड़? Okay, bhakti increases from the practice of utsaha, enthusiasm for Krishna's devotional service. तो जो भक्ति है इसका निष्कर्ष ये है कि जो भक्ति है वो कृष्ण की प्रति उत्साह रखने से होती है. Nischaya, conviction about Krishna's devotional service. और निश्चय जो कि कृष्ण की सेवा के प्रति निश्चय विश्वास, दृढ़ विश्वास होने से होती है. Dhairya, not being restless or deviated from Krishna's devotional service. और धैर्य से जो कि मतलब अपने पथ से नहीं हिलना और उसके ऊपर विश्वास रख के उसमें लगे रहना. Tat karma pravartana, performing various activities for the purpose of serving Krishna. और तत्त कर्म प्रवर्तनत का मतलब है अलग अलग सेवाएं करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए. Sangha tyag, giving up all association except for a devotee association. और संग त्याग मतलब सारे संग को त्याग कर देना सिवाय भक्तों के संग के. Sato vritihi, following the footsteps of Krishna's saintly devotees. सतो वृत्ति मतलब भगवान कृष्ण के संतों के जो भक्त थे, महान भक्त थे, उनके पद चिन्हों में चलना. Okay. But no electricity. Okay, and now we're coming on to some excerpts from Bhaktivinoda Thakur's Bhaktya Loka. अब हम भक्ति विनोद ठाकुर के भक्त्या लोका पर आ रहे हैं. Does anyone have any questions up till now? किसी को अभी तक कोई प्रश्न है? Does not looks like it. Does not looks like it. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Mataji, can you please explain why has Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj said Nishchaya to be our Vishwas? How has he kind of concluded this? Well, There's the doubt. Yeah, if you remember through Prabhupada's purport, Prabhupada explained that Nishchaya meant faith, but faith with enthusiasm. That will also come up here. Bhaktivinoda Thakur and Bhakti Loka says the same thing. His Srila Prabhupada's definition of Nishchaya was confidence rather than just conviction. Okay. He explains that also in different words, and here we'll get another different explanation. Okay. Bhaktivinoda Thakur explains that simply faith alone, if you don't actually do anything about your faith, then it's not Nishchaya, because it's not really faith. Faith, it requires you to actually show that you have faith.
You can't sit and have faith and do nothing. If the faith is there, it will enthuse you to do something about it. So that's where the difference comes in. Although it does mean faith, but faith intrinsically means that you have to do something. Otherwise, what is it? Is it really faith or not? Yeah, that's wonderful. Thank you. Okay, thank you. Okay, so from Bhakti Aloka, we're going through again. Utsaha. Enthusiasm. हम सबसे पहले उत्साह पर आ रहे हैं. Without utsaha, one becomes negligent in his worship. और जब यदि किसी व्यक्ति में उत्साह नहीं होता, वह उस चीज को लेके लापरवाह हो जाता है. Now there's a lot of, I don't know if you can translate all this into Hindi. I'll tell you what this sentence says. You can tell me if it works. He says, negligence is born out of inactivity, apathy, or indifference. तो जो ये आलस है, I'll try. There might be that in Hindi, there's not so much difference between these three words, right? तो किसी चीज में आलस आने का मतलब ये होता है कि हम उस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं. He says laziness and inertia are called inactivity. और जो आलस है या फिर हर समय सोते रहना, इसको इनएक्टिविटी मतलब कोई भी काम ना करना बोला गया है. So he says when utsaha is generated, laziness and inertia cannot remain. तो जब उत्साह आ जाता है तो आलस और नींद अपने आप ही चली जाती है. And he defines inertia. The absence of a desire to work is inertia. तो यहाँ पे इनर्शिया एक शब्द होता है जिसका मतलब बताया गया है कि कुछ भी काम करने की इच्छा ना होना. And he says inertia therefore is opposite to the nature of the spirit soul. और ये जो कुछ भी काम करने की इच्छा ना होना, ये हमारी वास्तविक जो स्थिति है उसका उल्टा ही है. If one allows inertia to remain in his body or his heart, how can he perform devotional service? और यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में इन सब चीजों को जगह दे देता है तो वो भक्ति किस प्रकार कर सकता है. So he says karma arises from lust. तो जो कर्म Karma. जो कर्म है वह काम से उत्पन्न होता है. Jnana arises from indifference. और ज्ञान अलग होने से, विभिन्न होने से उत्पन्न होता है. And bhakti arises from faith in the Supreme Lord. और जो भक्ति है वह भगवान में विश्वास होने से उत्पन्न होती है. If a person has attained faith, he is naturally disgusted with material activities. तो जो जिस व्यक्ति को विश्वास आ चुका है, उसका मतलब ये है कि वो साधारण रूप से भौतिक चीजों से उब चुका है. अब उसका मन उन चीजों से भर चुका है. Therefore, he accepts without attachment only those activities that are favorable for increasing his faith in the Lord. तो फिर वो बिना किसी आसक्ति के सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनाता है जो कि भगवान की भक्ति करने के लिए अनुकूल है. But without the material body, one cannot cultivate devotional service. लेकिन बिना इस भौतिक शरीर के कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता. So there is no benefit in renouncing activities that are required to maintain the physical body. तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है कि हम उन गतिविधियों को भी करना छोड़ दें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है. So therefore the devotees don't give them up and they can enjoy them as long as they remain fixed in their Krishna consciousness. इसीलिए जो भक्त है वह उन गतिविधियों को नहीं छोड़ते और वो इन चीजों से आनंद भी लेते हैं, पर तब तक ही जब तक वे अपनी भक्ति में स्थित रहते हैं. So Prabhupada would give the example how the jnanis have to be so renounced in their eating habits. They can't eat this, they can't eat that. But we can have a feast because it's been offered to Krishna. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उनको कितना खुद को कंट्रोल करना पड़ता है कि हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हम कुछ भी खा सकते हैं, हम बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं, हम फीस्टिंग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वह कृष्ण को भोग लगा हुआ है. And also the example how the jnanis say, no, I don't want money. But Prabhupada said, I'll hold out 2 hands and I'll take all the money you can give and I'll use it for Krishna.
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञानी कैसे कहते हैं नहीं 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 मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं तो उस व्यक्ति के दोनों हाथ पकड़ के उसके सारे पैसे ले लूंगा. Okay, now we're coming back to enthusiasm. So we're now coming back to chanting the holy name. In Hari Bhakti Vinas, pramada is counted as as one of the offenses against the holy name. What Pramada, which means inattentiveness. अनअटेंटिवनेस. ठीक है. तो Yeah. हरि भक्ति विलास में हरि नाम का जप करते हुए पूर्ण रूप से सावधान ना रहने को भी एक अपराध बताया गया है. Or Harinam Chintamani divided inattentives into apathy, inactivity, and distraction. Apathy, Apathy, inactivity, Hmm. and distraction. What does apathy means? Apathy means it's like lack of enthusiasm. Okay. It's like when you can't be bothered, you're too lazy to do something. You've got no enthusiasm to do something like that. ठीक है. तो हरि नाम चिंतामणि में पूर्ण रूप से सावधान न रहना को 3 हिस्सों में बांटा गया है. पहला कि नाम जप की तरफ आलस दिखाना, दूसरा उससे Inactivity. यस, और उस चीज पे काम ना करना, एंड व्हाट वाज द थर्ड वन? Distraction. और इधर उधर ध्यान करना, इधर उधर ध्यान लगा के रखना. Okay, if I divert and go into that, we'll never get finished. But I've also got that in somewhere separately. But what he says, unless one gets free from these 3 types of inattentiveness, one cannot perform devotional service at all. तो यहाँ पे हरि नाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर is saying, right? Yes, Bhakti Vinod Thakur is saying. तो भक्ति विनोद, can you please repeat that line? Unless one gets free from all 3 types of inattentiveness, one cannot perform devotional service. Yes. तो भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बोल रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति इन 3 चीजों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो अच्छे से भक्ति नहीं कर सकता. Even if one gives up all other namaparats, but if he is still inattentive, he will never have attraction for the holy name. और जबकि कोई व्यक्ति सारे नाम अपराधों से मुक्त हो जाए, लेकिन फिर भी वह ध्यान पूर्वक जप नहीं कर सकता, तो वो कभी भी भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएगा. So if one has enthusiasm at the beginning of your devotional service, and that enthusiasm never becomes cold, then one will never become apathetic, lazy, or distracted in chanting the holy name. तो जैसे हमें भक्ति में शुरू में उत्साह होता है, और आगे भी धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ यदि वह उत्साह नहीं जाता, तो व्यक्ति के अंदर कभी भी आलस, इधर उधर ध्यान भटकना या उत्साह की कमी नहीं होती. All anarthas are vanquished by performing devotional service with enthusiasm. तो सारे जो हमारे अनर्थ हैं वो खत्म हो जाते सिर्फ एक ही तरीके से, कि यदि हम उत्साह पूर्वक भक्ति करें. And the more anarthas are vanquished, the more nishta or firm faith is awakened. तो जितने ज्यादा हमारे अनर्थ खत्म होते हैं, उतनी ज्यादा हमें निष्ठा आती है. Now here's that quote about faith. The word shraddha is certainly faith, but enthusiasm is the life of faith. तो जो श्रद्धा का मतलब है, उसका मतलब तो विश्वास है ही, लेकिन जो विश्वास की जीवन है वह उत्साह है. Without faith without enthusiasm is meaningless. तो बिना विश्वास के उत्साह होना भी कोई तुक नहीं है उस बात की. People think they have faith in God, but because they have no enthusiasm, their faith has no meaning. तो लोग कहते हैं कि हमें भगवान में विश्वास है, लेकिन बिना उत्साह के उस विश्वास का कोई मतलब नहीं है. Therefore, due to lack of sadhu sangha, they do not perform devotional service. इसीलिए कम भक्तों का संग ना होने की वजह से वह भक्ति नहीं कर पाते. Okay, that's utsaha. Now we come on to nischaya, confidence. तो अभी हमने उत्साह के बारे में बात करी, हम निश्चय के बारे में बात करेंगे. Srila Rupa Goswami has instructed the practitioners of devotional service to be confident. तो रूप गोस्वामी ने भक्ति करने वाले लोगों के लिए बोला है कि उन्हें बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय में रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके अंदर बहुत ज्यादा.
Until this confidence is achieved, one will be doubtful. और जब तक ये नहीं उत्पन्न होता तब तक वह हमेशा आशंका में रहेगा। Doubtful persons never have auspiciousness. तो जिन लोगों को हमेशा शंका रहती है वह कभी भी उनको कभी भी शुभ नहीं होता, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। How can they have faith in unalloyed devotional service if they are doubtful at heart? तो उनके अंदर कैसे भक्ति के लिए निश्चय हो सकता है अगर उनके हृदय में हमेशा शंका ही है तो। One who has faith is certainly without doubts, because the word faith means firm conviction. तो जिस व्यक्ति को विश्वास है उसका मतलब वो बिना किसी शंका के ही है, क्योंकि जिसको विश्वास है उसे कभी शंका नहीं हो सकती। Now Bhaktivinoda Thakur is coming on to another subject which he calls amnaya. माया Amnaya. अमनया। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर एक अलग विषय पे आ रहे हैं जिसका मतलब है अमनया, जिसको अमनया। Yeah. But his definition is Vedic knowledge received through the Guru Parampara is called amnaya. तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि जो वैदिक ज्ञान हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होता है उसे अमनया बोलते हैं। So because the Vedic knowledge contains this this knowledge that we need for devotional service, but the previous Mahajanas have separately written instructions regarding the qualifications for devotional service. जब ये वैदिक ज्ञान हमें भक्ति करने के लिए मदद करता है, लेकिन पहले के पूर्ववर्ती आचार्यों ने what was the last line? Yeah, so the Mahajanas have separately written instructions regarding the qualifications for devotional service. तो पहले के जो महाजन हैं उन्होंने एक अलग से लिखा हुआ है कि एक भक्त के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए। So they've taken the Vedic statements, but they've refined it to what we need to know. तो उन्होंने वैदिक ग्रंथों से ही लिया है, लेकिन सिर्फ उतना ही लिखा है जितना हमें जानना चाहिए। So once we follow these instructions of the acharyas, and then we can understand the abhidaya. तो जब हम इन आचार्यों के निर्देशों का पालन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी अभिदय का मतलब क्या होता है। And abhidaya means is devotional service. और अभिदय का मतलब होता है भगवान की प्रेम में से भक्ति। And it also is sadhana bhakti. और साधना भक्ति भी। Okay, two types of sadhana bhakti. To perform the limbs of devotional service according to the dictation of vidhi or prescribed rules is called vaidhi sadhana bhakti. तो साधना भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं। पहली साधना भक्ति होती है वैदिक साधना भक्ति, जो कि भक्ति के अंगों से चल के पालन किया जाता है जिनको। And service performed out of spontaneous attachment is raga bhakti. और जो कि बहुत अपने आप से ही एक अंदर से व्यक्ति को आता है कि प्रेम आता है भगवान के लिए, उसको रागानुगा साधना भक्ति बोलते हैं। Okay. From sadhana bhakti up to this attainment of prem is described in Chaitanya Charitamrita by Chaitanya Mahaprabhu as follows. तो साधना भक्ति से प्रेम में भक्ति यानी कि रागानुगा भक्ति पे आने के स्तरों को चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार बताया है। Kona bhagya kona jivara shraddha yadi haya tave se jiva sadhu sangha ye karaya. If by good fortune a living entity develops faith in Krishna, he begins to associate with devotees. यदि किसी का बहुत सौभाग्य हो और उसको भगवान की भक्ति में रुचि है तो वह शुद्ध भक्तों का संग करना शुरू कर देता है। Sadhu sangha haite haya shravana kirtana sadhana bhakti haya sarvanartha nirvartana. When one is encouraged in devotional service by the association of devotees, one becomes free from unwanted contamination by following the regulative principles and chanting and hearing.
यदि कोई शुद्ध भक्तों का संग करता है तो उसके धीरे धीरे सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर की सारी गंदगी खत्म हो जाती है और वह भक्ति में रुचि दिखाने लगता है। Anatnavati haile bhakti nishtahaya, nishtahaite shravanadye ruchi upajaya. When one is freed from unwanted contamination, he advances with firm faith. तो जब कोई बिना बात की गंदगी से मुक्त हो जाता है तो वह बहुत दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। When firm faith and devotional service awakens, a taste for hearing and chanting also awakens. जब भक्ति में दृढ़ विश्वास हो जाता है तो श्रवण और कीर्तन में भी हमारी रुचि बढ़ने लगती है। Ruchi haiti bhaktya haya asakti prachura, asakti haiti chite janme Krishna prityan kura. After taste is awakened, a deep attachment arises, and from that attachment, the seed of love of Krishna grows in the heart. तो जब रस आ जाता है तो फिर उसके प्रति आसक्ति भी आ जाती है और इस आसक्ति के बढ़ते बढ़ते कृष्ण के लिए प्रेम आ जाता है। Se bhava gada haile dare prema nama, se prema prayojana sarvananda dhamma. When that ecstatic emotional stage intensified, it is called love of Godhead. और जब जब ये चीज और आगे बढ़ जाती है, जब ये प्रेम आगे बढ़ जाता है, इसको भगवान के लिए भाव, राइट माता जी? No, it becomes, it's called love of God. We're up to prema. Okay, so Oh, yeah. So it says, the Bengali says, say bhava gada haile dare prema dana. So when ecstatic emotional stage is bhava and love of Godhead is prema. ओके, तो जब ये आसक्ति बढ़ जाती है तो धीरे धीरे हम प्रेम के स्तर पर आ जाते हैं। Such love is life's ultimate goal and the reservoir of all pleasure. तो ये जो प्रेम है ये ही एक व्यक्ति के जीवन का एक जीवन की सफलता है और यही सारे आनंद का सोर्स है, जहां से सारा आनंद आ रहा है। Those who have doubts in the principal teachings of Chaitanya Mahaprabhu are not qualified for devotional service. और जिनको भगवान चैतन्य महाप्रभु की आदेशों पे या शिक्षाओं पे शक है, वह भक्ति करने के लिए योग्य नहीं है। When doubts arrive, one's devotional service becomes corrupted. तो जब किसी के मन में शंका आती है तो उसकी भक्ति जो है वह खराब हो जाती है। Desires are polluted. और जो इच्छाएं हैं वह गंदी हो जाती हैं। Unwanted results are achieved. और उसके बाद फिर बिना बात की चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। And thus everything is ruined. और फिर इस प्रकार सब खराब हो जाता है। Therefore, those who have desire for pure devotional service should perform devotional service with firm confidence. और जिनको वास्तव में इच्छा है शुद्ध भक्ति करने की, उनको बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ इसको पालन करना चाहिए। Now, a short summary for Dairya patience. What? A short summary, not very long. तो ये बहुत छोटे में माता जी ने हमें समझाया। For the practitioner of devotional service, patience is extremely necessary. तो भक्ति जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके लिए धैर्य होना बहुत ही अनिवार्य है। One who possesses the quality of Dairya is called Dhira, sober. तो जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है उसको धीर भी बोला गया है। Due to lack of this quality, people become restless. और ये वाला गुण कम मात्रा में होने से लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। Those who are impatient cannot do any work. और जिनके अंदर कोई भी धैर्य नहीं होता, वह कोई भी कार्य नहीं कर सकते। By the quality of Dairya, a practitioner controls first himself and then the whole world. और धैर्य होने से व्यक्ति जो है पहले खुद के ऊपर भी काबू पाता है और फिर बाकी चीजों पर भी काबू पा लेता है। Okay, that's Dairya. Tat tat karma pravartana. तो अभी हमने धैर्य पे चर्चा करी, अब हम चर्चा करेंगे तत्त कर्म प्रवर्तन, Which activities by which pure devotional service is cultivated. वह गतिविधियां जिससे शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है। And he quotes from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 19th chapter, 20th to 24th verses.
which is Krishna's description to Uddhava about what devotional service is. तो अब भक्ति विनोद ठाकुर भागवतम के 11वें स्कंद का 9वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक ले रहे हैं, जिसमें भगवान उद्धव को भक्ति के बारे में बता रहे हैं. So we might summarize it anyway. Firm faith in the blissful narration of my pastimes. और मेरे pastimes, what do we call pastimes? Leela. Yes, yes. मेरी लीला के अंदर दृढ़ विश्वास होके उसको सुनना. Oh, this is one whole long sentence. Okay. Constant chanting of my glories. और फिर भगवान का हमेशा नाम जप करते रहना. Unwavering attachment to ceremonial worship of me. और बहुत दृढ़ बिना हिली हुई आसक्ति होना, बहुत बड़ी आसक्ति होना मेरी पूजा से. Praising me through beautiful hymns. और मेरे लिए अलग अलग चीजें गा के मेरे को तारीफ करना, मतलब मेरे गुणों को करना. I don't know. Great respect for my devotional service. भक्ति के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होना, आदर होना. Offering obeisances with the entire body. और अपने पूरे शरीर से प्रणाम करना. Performing first-class worship of my devotees. और मेरे भक्तों की सबसे अच्छे से सेवा करना. Conscious of me and all living entities. और मेरे हर व्यक्ति में मुझे देखना. Offering ordinary bodily activities in my devotional service. और अपनी सारी शारीरिक गतिविधियों को मेरी सेवा में लगाना. Use of the words to describe my qualities. और ये what is it? Use of words, shabd. It's not clear. I think what is this? He says using words to describe my qualities. Okay. मेरे को मेरी तारीफ प्रशंसा करने के लिए शब्दों का प्रयोग करना. Offering the mind to me. अपने मन को मेरे में लगाना. Rejection of material desires. और अपनी भौतिक इच्छाओं को से मन हटा लेना. Giving up wealth for my devotional service. Giving up wealth for my devotional service. Yes. अपनी दौलत को मेरी भक्ति करने के लिए त्याग देना. Renouncing material sense gratification and happiness. और भौतिक इंद्रिय तृप्ति को और खुशियों को त्याग देना. Performing all desirable activities such as charity, sacrifice, chanting, vows, and austerities for the purpose of achieving me. और सारी ऐसी गतिविधियां करना जैसे नाम जप करना, तपस्या करना, दान करना, सिर्फ एक ही मकसद से मुझे प्राप्त करने के लिए. These constitute actual religious principles. ये जो है असली में सारे धार्मिक धर्म की स्थापना करती है, ये सारी गतिविधियां. By which those human beings who have actually surrendered themselves to me automatically develop love for me. और इस तरीके से ये करने से जो व्यक्ति मेरे ऊपर अपने आप को सरेंडर करता है, वह स्वाभाविक रूप से मुझे पा लेता है. What other purpose or goal could remain for my devotee? What other purpose or goal could remain for my devotee? और इसके अलावा फिर मेरे भक्त के लिए क्या ही रह जाता है, क्या ही बच जाता है उसकी जिंदगी में. So then Bhaktivinoda Thakur says, based on these instructions from the Lord, Rupa Goswami has written his Bhakti Rasamrita Sindhu and divided these activities into 64 items. तो इसी श्लोक के ऊपर करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु लिखी है और उसको 64 अंगों में बांट दिया है. And also written in Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj. और ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा भी लिखी गई है. So the first ones are all about taking shelter of the Guru. After receiving initiation and instructions from a bona fide Guru, a fortunate disciple should follow the path of the previous sadhus.
तो एक जो बहुत व्यक्ति जो बहुत सौभाग्यशाली होता है, जो एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लेता है और उनके अनुगत हो जाता है, तो उसको पूर्ववर्ती आचार्यों का पालन करना चाहिए। Those who are proud neglect the previous Mahajanas and create their own new paths. और जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, वह पूर्ववर्ती आचार्यों को त्याग देते हैं और अपने नए तरीके निकालने लगते हैं। What do they do? I turn the page. As a result, they soon proceed on an inauspicious path and ruin themselves. और इस प्रकार से करते हुए वह एक अशुभ रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने आप को खराब कर लेते हैं। Those who are simple endeavor to properly learn the teachings of the Lord from Sri Chaitanya Charitamrita. जो लोग बहुत सरल हैं, वह चैतन्य चरितामृत से सारी शिक्षा लेने की इच्छा रखते हैं। The Lord's teaching are our only life. जो भगवान की शिक्षा है, वही सिर्फ हमारा जीवन है। This is Saddharma. यही है सद्धर्म। If one cannot understand on his own, then he prays at the feet of his Siksha Guru and learns from him. और जब फिर कोई व्यक्ति खुद से कुछ नहीं समझ पाता, तो वह अपने शिक्षक गुरु के चरणों में बैठ के उनसे विनती करता है कि वह उसको समझाएं। Those who have this kind of determination to follow Saddharma quickly achieve the desired goal. तो और जिनके अंदर इस प्रकार की इच्छाएं होती हैं सद्धर्म को समझने की, उस पर चलने की, वह बहुत जल्दी अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं। So now Bhakti Vinod Thakur is going through some other items. So he's quoting from Bhakti Rasamrita Sindhu, 10 items, these 64 angas of devotional service. The first 10 are things to be done, and the second 10 are things to be avoided. तो भक्ति विनोद ठाकुर अब भक्ति रसामृत सिंधु से 10 चीजें ले रहे हैं 64 में से। पहली 10 चीजें जो हमें करनी चाहिए और दूसरी 10 चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। So the first 5 are all about the Guru. We should read at least those. We may not read all. तो पहली 5 जो है वह गुरु के बारे में है। जब अगर हम सारी नहीं पढ़ते, लेकिन हमें वो पहली 5 जरूर पढ़नी चाहिए। Those who are aspiring for devotional service should first take shelter of Sri Guru. तो जो भक्ति करना चाह रहे हैं, उनको सबसे पहले एक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। Take initiation and instruction from him. उनसे दीक्षा लेना और उनसे आदेश लेना चाहिए। And serve him. और फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। They should also follow the behaviors of the sadhus and learn the conclusion taught by the sadhus. तो उनको साधुओं का जो व्यवहार है उससे कुछ सीखना चाहिए और उसका निष्कर्ष भी समझना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए। In order to make one life Krishna conscious, one should reside in a place related to Krishna and give up enjoyment of sense gratification for the service of Krishna. तो जो व्यक्ति कृष्ण को चाहते हैं, उनको अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां से वो कृष्ण के पास आ सके। In ordinary dealings, one should accept the wealth that is necessary to favorably maintain Krishna's business. तो हमें ऐसा ही सिर्फ धन एकत्रित करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए जो भगवान की सेवा में लग सके। To practice devotional service, one should observe fast days like Ekadashi and Janmashtami. और भक्ति करने के लिए कुछ व्रतों का भी पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी और जन्माष्टमी। One should respect banyan trees in order to maintain the glories of the world. तो in order to maintain the glories of The world. world. Yeah, world. ओके, तो इस संसार की ग्लोरीज बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति को बनियन के वृक्ष का भी सम्मान करना चाहिए। He says such trees are one of the Lord's opulences, and that's described in the Bhagavad Gita. और ये बोला जाता है कि ये भगवान के एक ऑपुलेंस में से एक है, ये बनियन का जो वृक्ष है, और इसलिए हमें इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। Okay, so that was all 10 items that to be followed, the first 10 items. तो ये पहली 10 चीजें थी जो कि हमें करनी चाहिए। That'd be good. I'm just trying to see what else is left. Oh, too many things are left. I can't read all of these.
The second things are things to be avoided, like association with persons averse to this Lord's service. तो दूसरी 10 चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसका पहला है कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भक्ति के विपरीत होते हैं, Not accepting unqualified disciples, और बिना गुणों के शिष्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। not have too much endeavor for big projects, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए बड़े बड़े कार्यों के लिए। not reading too many books, बहुत ज्यादा किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। not be agitated if we don't achieve what we want, अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें उस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए। give up urges like lamentation and anger, गलत चीजों को छोड़ना चाहिए, जैसे किसी भी चीज पे दुख करना या गुस्सा करना। should not worship other demigods, but they should not disrespect them. देवी देवताओं की पूजा ना करना और सही उसी समय पे उनको आदर भी देना। One should not cause anxiety to any living entity, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी Which- अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, which means that the heart should always be filled with compassion for others. जिसका मतलब है कि हृदय में हमेशा दूसरों के लिए दया भावना होनी चाहिए। A person desiring for devotional service should carefully practice this characteristic. और जो लोगों जिन व्यक्तियों को भक्ति चाहिए उसे उस व्यक्ति को इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। Most essential to give up the 10 offenses in chanting, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नाम जप करते हुए 10 अपराध होते हैं उनसे बचना, and the offenses in serving the Lord. और सेवा अपराधों से बचना। For one who is negligent in this regard, endeavoring for devotional service becomes useless. तो और जो व्यक्ति इन चीजों का पालन नहीं करता और भक्ति में उन्नति करना चाहता है वो गलत रास्ते पर चल रहा है। A practitioner should not allow blasphemy of Krishna or the Vaishnavas to enter his ears. तो एक साधक को कभी भी भक्त की और कृष्ण की निंदा नहीं सुननी चाहिए। If such blasphemy is taking place, he should leave. और यदि वह किसी ऐसे स्थान पे है जहाँ पे ये सब हो रहा है तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए। Those who have weak hearts, who hang around just because of social etiquette and hear the blasphemy of Krishna or the Vaishnavas, will be gradually distracted from devotional service. लेकिन जो लोग अपने आप को समाज में रखने के लिए ऐसी चीजों में हाँ मिलाते हैं और भक्तों की और भगवान की निंदा सुनते हैं, वे धीरे धीरे भक्ति के पद से नीचे गिर जाएंगे। By careful practice of the above mentioned 20 limbs of bhav, devotional sentiment is wakened. और यदि कोई व्यक्ति ऊपर अभी जो हमने 20 चीजों के ऊपर चर्चा करी उनको अच्छे से पालन करता है तो वह धीरे धीरे भक्ति में उन्नति करेगा। The mercy of Krishna is the root cause of awakening bhav. और जो कृष्ण की कृपा है वह भाव विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Without sadhu sangha, one cannot achieve the mercy of Krishna. बिना भक्तों के संग के कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति को आकर्षित नहीं कर सकता। The principal forms of sadhu sangha are taking shelter of the lotus feet of the spiritual master, taking initiation from him, and serving him. सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग में एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना, उनसे आदेश लेना और उनकी सेवा करना। Conclusion. The whole life of a practitioner should be decorated with full surrender. तो ये जो इसका निष्कर्ष ये है कि एक साधक का पूरा जीवन आत्मनिवेदन में ही निकल जाना चाहिए। 6 types of surrender explained in many places. तो 6 तरीके के आत्मनिवेदन काफी जगह पे समझाए गए हैं। A life of a living entity is useless without surrender. तो जो एक व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है यदि वो आत्मनिवेदन नहीं करता तो। The living entity should always worship Krishna with full surrender. तो एक व्यक्ति है उसको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आत्मनिवेदन से। Okay, Sangha Tyag, संग त्याग। number 5. Sangha Tyag is split up in 2 different types. So 2 types of Sangha are association and attachment.
तो दो प्रकार के संग होते हैं, एक तो किसी का वास्तव में संग करना या फिर किसी से आसक्ति होना, Association is of two types. और संग भी दो प्रकार के होते हैं, Of association with non-devotees and association with women or अभक्तों का womanizers. भक्तों का संग करना या स्त्रियों का संग करना, या जो लोग स्त्रियों के साथ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं ऐसे लोगों का संग करना। Now, the non-devotees are 7 types. और अभक्त जो होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं, Jnanis, ज्ञानी, karmis, कर्मी, yogis, demigod worshippers, देवी देवताओं की पूजा करने वाले, dry logicians, व्हाट, dry logicians, सूखी तर्क देने वाले, atheists, अभक्त, आस्तिक लोग, नास्तिक लोग, and sense enjoyers. और इंद्रिय तृप्ति करने वाले। Okay. Attachment is also of 2 types. आसक्ति भी 2 प्रकार की होती है, Attachment for prejudices and attachment to assets. अटैचमेंट टू Assets. नहीं, एसेट से, First one is prejudices. prejudices, Yes. what does it mean exactly, like how do we say? Okay. धारणाएं, धारणाएं, पूर्व नियोजित धारणाएं। अच्छा, मतलब already set mind। Yeah, set mind, which it basically, as far as I can understand from the description, it has to do with our mind, what our likes and dislikes are, things we're attracted to and averse to. आसक्ति भी 2 प्रकार की होती है, पहली बात कि अपनी भौतिक चीजों से आसक्ति होना, और दूसरी होती है कि एक पहले से ही दिमाग में किसी चीज के बारे में सोच लेना कि ये चीज इसी प्रकार होती है। And prejudices are of 2 types, ancient and modern. तो ये जो धारणाएं हैं ये भी 2 तरीके की होती हैं, एक नए तरीके की और एक पुराने जमाने की। So ancient means in previous lives, or like our inherent nature, and modern means in this life, which basically means from our association, what we've come. तो धारणा भी 2 तरीके की होती है, तो उसमें से जो पुराने तरीके की यानी कि जो हमारे पहले के जीवन से है, या फिर पहले जो हमने सीखा, पहले के संस्कार है, और नई तरीके की धारणाएं ये होती है नए जमाने की, कि जिस प्रकार के लोग का हम संग करते हैं उस प्रकार के हम हो जाते हैं। Okay. If one associates with non-devotees, then a very short time one's intelligence is polluted and heart is overcome by their propensities. और यदि कोई अभक्तों का संग करता है तो उसकी जो सारी चेतना है वह प्रदूषित हो जाती है और बहुत जल्दी वह उनकी तरह ही बन जाता है। Thus, if we desire devotional service, we should carefully give up association of non-devotees. और यदि हम सच्ची में भक्ति करना चाहते हैं तो हमें अभक्तों का संग त्याग देना चाहिए। Renunciants are forbidden to speak with any woman. Householders should not associate with anyone else aside from their own wives. तो जो सन्यासी हैं उनको किसी भी स्त्री का संग करना वर्जित है, और जो गृहस्थ हैं उनको अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री का संग करना वर्जित है। Okay, now let's go on to this prejudice. This is a little interesting. 2 types of prejudice, ancient and current. The conditioned living entity has been performing fruitive activities and endeavoring for knowledge since time immemorial. तो जो धारणाएं हैं वह 2 प्रकार की होती हैं, जिस प्रकार से अभी हमने चर्चा करी थी, और उसी प्रकार से माता जी ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही जन्मों से इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। And so the prejudices that have developed in his subtle body as a result are called ancient prejudices. तो जो पुराने तरीके की धारणाएं बताई गई वह होती हैं जो उसके सूक्ष्म शरीर में उसके पिछले जन्मों से बनी हुई है। And they're also known as one's nature. तो जिसको हम एक व्यक्ति का व्यवहार भी कहते हैं। The person's association with karma and gyan is a result of attachment born of the prejudices of one's nature
that are produced from past karma and gyan. Can you please repeat? Yeah, I know, that's a mouthful, isn't it? Okay, so people's association with karma and gyan, it means our propensity to engage in karma and gyan is the result of attachment born from our ancient prejudices. तो जिस व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में आसक्ति होती है वह इसीलिए होती है क्योंकि वह उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं. Okay, yeah, and he explains the same thing in the next sentence. From ancient prejudices, one develops association with karma and gyan. तो पुरानी धारणाओं की वजह से किसी व्यक्ति का ज्ञान और कर्म से आसक्ति होती है. Association with these ancient prejudices is inevitable. जो इन चीजों से आसक्ति है वो कभी भी खत्म नहीं करी जा सकती. Despite all attempts, even up to suicide alone cannot give up one's prejudices. तो हर तरीके की प्रयास करने के बाद जब यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या भी कर ले तब भी इन चीजों को खत्म नहीं करा जा सकता. Prejudices or attachments for good or bad attained in this life are called modern prejudices. और वह धारणाएं जो इस जीवन में ली गई हो किसी अच्छी चीज के लिए या बुरी चीज के लिए उसे नए जमाने की धारणाएं बोला जाता है. Everyone in this world is under the control of these two types of prejudices. और हर व्यक्ति जो इस संसार में है वह इन दो तरीके की धारणाओं के अंतर्गत आता है. Only sadhu sangha can reform attachment to prejudices. सिर्फ और सिर्फ साधु संगी भक्तों का संग ही इस चीज से हमें बचा सकता है. Sadhu sangha is the only remedy for this disease. जो भक्तों का संग है इस चीज की सिर्फ यही एक दवाई है. Unless one reforms his attachment to prejudices, one cannot attain perfection in devotional service by any other means. यदि कोई व्यक्ति इन चीजों से मुक्त नहीं हो पाता तो वह किसी भी तरीके से भक्ति में उन्नति नहीं कर सकता. Due to association with prejudices, a living entity's propensity for ignorance and passion becomes stronger. तो जब ये धारणाएं नहीं कम होती तो व्यक्ति के अंदर तमोगुण और रजोगुण बढ़ जाता है. So these can be seen in people's eating, sleeping, and sensual activities due to association with prejudices. और ये हम व्यक्ति खाने पीने की सोने उठने की आदतों में देख सकते हैं जो कि उसकी पूर्व जन्म की धारणाओं से है. Karamis and Gyanis disrespect the Vaishnavas only due to this attachment for prejudices. कर्मी और जो ज्ञानी लोग होते हैं वे भक्तों का जो सम्मान नहीं करते वह भी इसी वजह से नहीं करते. Until attachment to prejudices is destroyed, 10 offenses in chanting will not be uprooted. जब तक ये धारणाओं से हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम 10 नाम अपराधों से भी नहीं बच सकते. Offenses at the feet of the sadhus is due to being proud of one's karma and gyan. और भक्तों के चरणों पे अपराध करना भी इसी वजह से होता है क्योंकि हमें अपने कर्म और ज्ञान पे घमंड होता है. And some positive conclusion. It has been seen that many fortunate souls have given up attachment for prejudices by the association of pure Vaishnavas. और ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज से बाहर भी आए हैं साधु संघ के द्वारा. First example is given is with Narad Muni and the hunter Mrigari. तो ये पहला जो इसका उदाहरण दिया गया है वो नारद मुनि और मृगारी का उदाहरण दिया गया है. The foremost instruction of Sri Ramanujacharya is this: if you cannot purify yourself by any endeavor whatsoever, then just go and sit with the Vaishnavas and you will achieve all auspiciousness. तो रामानुजाचार्य की सबसे पहला जो आदेश है वह यही है कि अगर आप किसी भी प्रकार से अपने आप को नहीं बदल पा रहे तो जाके किसी भक्त के चरणों में बैठ जाओ और उनसे आदेश लो, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करो तो आप अपनी उन्नति कर पाओगे. Attachment for anything is easily removed by the association of the devotees. और किसी भी चीज से आसक्ति भक्तों का संग करने से हटाई जा सकती है. Still, one should try to get rid of petty attachments by fully engaging in devotional service. और फिर भी व्यक्ति को इन छोटी छोटी आसक्तियों से बचने के लिए भी हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए.
By carefully observing the vows approved in devotional service, these attachments are vanquished. और उन नियमों का अच्छी तरीके से पालन करके जो भक्ति के लिए दिए गए हैं वह अपनी इन आसक्तियों से बच सकता है. By observing Hari Vasara, Ekadashi, appearance days of the Lord, attachments are vanquished. हर एकादशी का पालन करने से और भगवान का जन्म वाले दिन व्रत पालन करने से यह आसक्तियां खत्म होती हैं. Now, you didn't ask me this question that I don't know the answer to. What Vasa is? Let me just try and search it and tell you. Vas. It wasn't like that. So, okay, it comes from Javadharma. Oh, Ekadasi is known as Harivasara. So हरिवासरा माता जी ने जो अभी शब्द यूज किया था उसका मतलब भी एकादशी और एकादशी को हरिवासरा भी बोला जाता है. Yeah, so he's explaining this. Yeah, times like Harivasara means Ekadasi. It's also translated as Ekadasi. Okay. I didn't know the answer to that. I should have looked it up before. It was a problem. Okay, conclusion for the Sadhu Sangha. No, it's not Sadhu Sangha. This is the conclusion for giving up Asat Sangha. For those who desire to attain pure devotional service, the association and non-devotees and women is meant to be given up. तो जो व्यक्ति भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं वे अभक्तों का और स्त्रियों का संग उन्हें त्याग देना चाहिए. It is extremely necessary for them to associate with sadhus in order to give up attachment for prejudices. तो उनके लिए बहुत अनिवार्य है कि वे भक्तों का संग करें ताकि वो अपनी पुरानी धारणाओं से बच सके. They must follow all vows meant for Vaishnavas in order to give up attachment for material objects. Can you please repeat? One must give up all vows meant for Vaishnavas in order to give up attachment for material objects. Okay, तो एक व्यक्ति को वे सारे नियमों का पालन करना चाहिए जो एक वैष्णव के लिए बने हुए हैं ताकि वे अपनी सारी भौतिक आसक्तियों से बच सके. One should not be negligent in these practices. तो किसी व्यक्ति को इस चीज में आलस नहीं करना चाहिए और ध्यान पूर्वक करना चाहिए. One should follow these instructions with great care and respect. और ये सारे आदेशों का पालन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए और आदर देना चाहिए. If one does not follow carefully, then cheating in the form of duplicity renders the whole endeavor useless. Can you please repeat? If one does not carefully follow these things I just described, then cheating in the form of duplicity renders the whole endeavor useless. Okay. So यदि कोई व्यक्ति इस चीज को अच्छे से पालन नहीं कर सकता तो वह धोखा दे रहा है और झूठ बोल रहा है और इस प्रकार उसके सारी जो कोशिशें हैं भक्ति में उन्नति करने की वह व्यर्थ हो जाती हैं. For those who do not have respect in this regard, attaining devotion to Sri Hari becomes very, very rare, even after hearing for many births. और यदि किसी व्यक्ति को इन चीजों का आदर नहीं होता तो भगवान के लिए प्रेम विकसित करना बहुत ही मुश्किल होता है जब चाहे वो कितने भी जन्मों से भगवान के बारे में सुनता रहे. Okay, so I'm going to finish there for today, and for next time we're going to look at Sadhu Vrittihi because it's quite an in-depth study. Okay, तो अभी माता जी कह रही है कि अभी के लिए आज मैं यही रोकूंगी और अगली बार हम सतो वृत्ति पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वह भी बहुत बड़ा विषय है. Okay, any questions, comments?